Question number 1 and 2 of this exercise are already discussed in previous video. Now we'll do in this part question number 3 and question number 4. So let's start. Question number 3 says express the following in the form P upon Q. Means हमें इन्हें fraction के form में represent करना है where P and Q are integers and Q not equals to 0. This question again has 3 parts. Let's start with the first one. 0.6 bar. What does it mean? 0.666 and so on. We will let x is equals to 0.666 and so on, and we'll mark it as equation number 1. It is a small trick of this question that जितने नंबर पे बार होता है, यहाँ पे एक नंबर पे बार है, so we'll multiply both side means LHS and RHS by 10. अगर यहाँ 2 नंबर पे बार होता तो हम 100 से करते, 3 नंबर पे बार होता तो हम 1000 से करते. So what we'll write here, 10 multiplied by x is equals to 10 multiplied by 0.666 and so on. 10x is equals to, when we multiply this by this, we'll get 6.666 and so on. We'll write here 10x. अब हम इसमें से स्प्लिट कर देंगे अपने फर्स्ट इक्वेशन का x. 0.66 को जब हम इसमें से स्प्लिट कर देंगे, we'll get here 6. 6 plus 0.66 क्या बना? 6.66. So हम इसे ऐसे लिखेंगे. This is the way to calculate. 6 plus x. आपने इस पार्ट को x लिख देंगे and you'll write in bracket from equation 1. इक्वेशन 1 के थ्रू आपने इसे x लिखा बिकॉज आपने वहां लेट किया था. अब यहाँ प्लस में इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा. 10x minus x is equals to 6. Here it is 9x is equals to 6. X is equals to 6 upon 9 which is equals to 2 upon 3. अब आपने इसे P upon Q की फॉर्म में भी लिख दिया. P and Q are integers and Q is not equals to 0. I hope this trick is clear to you. Now let's do the second part. 0.47 where the bar is on 7. We can write it again. 7 पे bar है. We can write it in this form and so on. The same method, let x is equals to 0.477 and so on, and we'll mark it as equation number 1. अब 8 पे बार है इस क्वेश्चन में भी, so same method will be used. Multiply both sides means LHS and RHS by 10. What here will be? 10x equals to 10 into 0.4777 and so on. After calculating, here it would be 4.777 and so on. अब what we have to do, हमें इसमें से x को split कर देना है. Means 0.4777 को हम इसमें से split करेंगे. So what will be the other portion left here? That is 4.3. जब हम 4.3 को हम कैसे कर सकते हैं? इसमें से इसको माइनस कर देंगे. We'll get 4.3. Now the same way we'll write here x. We have to write in bracket. Why we have written here x? From equation 1. 9x हो जाएगा. यहाँ से x प्लस में है माइनस होके is equals to 4.3. x is equals to 43 upon 4.3 upon 9. ये हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे क्योंकि हमें P upon Q प्रॉपर फॉर्म चाहिए, इंटीजर्स चाहिए. 43 upon 90 is the answer. Now you can check P upon Q की फॉर्म में. P and Q both are integers and Q is not equals to 0. Now let's do the third part, that is 0.001.
Here the bar is on 3 numbers. So अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 0. Very easy again. We can write it like this: 0.001, 001, and so on. We'll let it like this, as we have done in previous parts, as equation 1. यहाँ let लिख दीजिएगा. Then अब बार 3 नंबर्स पे है, सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय 1000. अगर 2 नंबर पे होता तो 100 पे, और 1 नंबर का हम केस कर ही चुके हैं. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000. Left hand side 1000x, here 1000 multiplied by 0.001, 001, and so on. We can write it like this. जब हम इसे multiply करेंगे, simply we'll get here 1.001001. Now हम इसमें से RHS साइड में से x को स्प्लिट कर लेंगे. We will get here 0.001001. अब इसमें क्या बचेगा इधर तरफ? Only 1. Now we'll write it like this: 1 plus x. How? Again from equation 1. हम x को यहाँ प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा. 1000x minus x equal 1, that is 999x equal 1. What is the value of x? 1/999. हमने x की सेलेक्ट किया था इसे, और ये इवेंचुअली ये था, तो हमने इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, where p and q are integers and q not equals to 0. Let's do the fourth question. Express 0.99999 and so on in the form p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. Why the answer is surprising, I'll tell you after solving this. 0.999 and so on is simply this. अभी हम सॉल्व करते आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस. So what we have to do the step, let x equals to 0.999 and so on. Equation 1. Since bar is on one number, we'll multiply both sides by 10. We'll get 10x is equals to 10 multiply 0.999 and so on. What we'll get after multiplying both of them is 9.999 and so on. अब हम इसमें से x को स्प्लिट कर देंगे, that is 0.999 and so on. यहाँ क्या बचेगा? 9, right? What we will do the next step is 9. We'll write here it as x. How? From equation 1. 10x minus x is 9x, which is equals to 9. X is equals to 1. So it is a little bit surprising how we can get 0.99 which is equals to 1. What we have seen through these questions is that हमारा क्वेश्चन ये था, इसका आंसर आया 1. इसका मतलब क्या हुआ? जो नंबर बार में होता है, जब हम उसे 9 से डिवाइड करेंगे तो इवेंचुअली हमारा आंसर आ जाएगा. इन प्रीवियस क्वेश्चन द क्वेश्चन वाज 0.3 बार, राइट, जिसमें एक ही पे बार हो तब ये वाली ट्रिक काम कर जाती है. मतलब एक पे बार ना हो और एक पे हो, इन दैट इट विल नॉट वर्क. दिस विल वर्क व्हेन देयर इज बार ऑन ऑल दी नंबर्स व्हिच आर गिवन. 0.3 पे बार है, 3 पे बार है इसमें. सो अब हम इस 3 ले और 3 को 9 से डिवाइड कर दें. विल गेट हियर 1/3. और हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था, पार्ट्स थे, उसमें फर्स्ट पार्ट था 0.6 बार. तो हम क्या करेंगे इस ट्रिक के हिसाब से? 6/9
we have got our answer as 2/3. तो इस तरीके से we can check our answer, we can verify our answers. I hope these questions must be clear. They are very important from exam point of view. If you have any doubt, you can comment in comment section.